difference in final value and initial value upon time taken. Okay, so how we are going to calculate acceleration? Acceleration को calculate करने का क्या तरीका है? That if the velocity of an object changes from an initial value to the final value in time set t, we are considering here time t. यहाँ हम लोग time को t ले गए हैं. This is our final value and this is our initial value. I am indicating here final value with V and initial value with U. So we are going to calculate the acceleration by using this formula. This kind of motion is called accelerated motion. ये जो motion है इसको accelerated motion कहते हैं. Now acceleration is taken to be positive if the direction, if it is in the direction of velocity, and negative when it is opposite to the direction of velocity. Acceleration जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है. Now if the object travel in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then acceleration of object is uniform. जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हम लोग इसी को कहेंगे. ठीक है. Means what we are saying that the object is traveling in a straight line and its velocity is either increasing or decreasing, but by equal amount in equal interval of time. तो equal interval of time में equal amount में velocity increase या decrease हो रहा है, तो हम लोग उसको uniform कहेंगे. Acceleration of the object is uniform, then we will say. Now the motion of free falling body is an example of uniform accelerated motion. Now an object can travel with non-uniform acceleration if velocity changes at non-uniform rate. अगर velocity जो है non-uniform rate में change हो रहा है, तब हम लोग उसको उसमें जो है हम लोग non-uniform motion जो है वो object का रहेगा. ठीक है. If car traveling along straight road increases the speed by unequal amount, then it is non-uniform acceleration. एक कार जो है रोड पे ट्रैवल कर रहा है तो उसका स्पीड जो है ये जरूरी नहीं है कि एक ही स्पीड से एक ही डिस्टेंस को वो कवर करे. तो ये जो है एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. नाउ when people discuss one question or example which is given in NCERT, then it is quite clear to you all. See, starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle at a velocity of 6 meters per second in 30 seconds. 30 सेकेंड में वो पैडलिंग कर रहा है. ठीक है. और वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड दे दी. Then he applied brakes such that velocity of bicycle come down to 4 and 5 in the 4 second in next 5 seconds. Now calculate the acceleration. See what we have discussed, that acceleration equal to that is final velocity minus इनिशियल वेलोसिटी. यही हम लोग कर रहे थे. तो जब हम लोग जो है फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा जो है आंसर. एक्सेलरेशन जो है कितना हुआ, मींस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टाइम टेकन. तो हियर व्हाट वी पीपल आर डिस्कसिंग इज दैट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी स्टेशनरी पोजीशन इट इज 0. Final velocity we are talking about 6 meters per second. Okay, and time taken is 30 seconds. So how we are going to calculate the acceleration? We will simply put here the final velocity is 6 minus 0 upon time taken. We will see. Say time taken here is 30 seconds. Time कितना लगा था? 30 seconds लगा था. So we will write it like this. Then we are going to calculate its acceleration. It is 0.2 meter per second. Okay. So in this way we are going to indicate that we are going to find out the acceleration. अगर acceleration निकालना हो, if we want to find out acceleration, what we are going to do? We are going to find out the difference between final value and initial value. So here final value is 6. And initial value he is starting from 0, so initial value is 0 and time taken is 30 seconds. So in this way we are going to calculate the acceleration. Okay. Now next one, if initial velocity is 6 in the second case, and if we are talking about the final velocity which is the final value,
Initial value is 6, final value is 5. Then how we are going to calculate? Because in this question, what they are saying that starting from stationary position, Rahul paddle his bicycle, attain a velocity of 6 meters per second, that is in 30 seconds. 30 सेकंड में राहुल जो है पैडलिंग करता है, इनिशियल पोजीशन उसका 0 है और 6 मीटर पर सेकंड ये दिया हुआ है वेलोसिटी, ठीक है, और 30 सेकंड में वो कवर अप करता है। तो हम लोग इनिशियल में से फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके एक्सेलरेशन को निकाले। नेक्स्ट जो बोलता है ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कम डाउन टू 4 इन नेक्स्ट 5 सेकंड, मतलब वो 6 से 4 में कम 4 हो गया जब ब्रेक अप्लाई हुआ। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 6 है और 6 से कहाँ रिड्यूस हो गया 4 में। तो अगेन वी विल डू द सेम थिंग, दैट इज 4 minus 6. नाउ टेल मी वेदर वी आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? Is it clear to you all? Yes, ma'am. In first one we are calculating that from initial position, इनिशियल पोजीशन से जो है हमारा जो कैरेक्टर है राहुल वो पैडलिंग कर रहा है। तो इनिशियल पोजीशन हमने 0 को कंसीडर किया, कहाँ का तक वेलोसिटी कितना अटेंड किया 6 मीटर पर सेकंड। तो 6 जो है वो फाइनल जो है वैल्यू हो गया, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू 6 हुआ और 0 था इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ हमने फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, we are writing the formula of acceleration. So here 6 minus 0 divided by 30, that will be the in this way we are going to find out. But in next case, when we are considering this as when he applies brake, what happened? It become 4. वो जो है जब ब्रेक अप्लाई करता है तो बाइसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारा जो फाइनल वेलोसिटी हुआ वो कितना हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। 6 तक पहुंचा था, अब 4 मीटर पर सेकेंड में से हम लोग 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट अ नेगेटिव नंबर। हम लोगों को एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को वो शो करेगा, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल जो है एनसीईआरटी में तुम लोगों का दिया हुआ है। देन लेट अस टॉक अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। कैसे ग्राफ बना के हम लोग मोशन को जो है शो करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू शो मोशन by using the graphical representation. See, graph provide a convenient method to present basic information about a variety of events. You have seen in a variety of events, particularly if you have noticed in sports, okay, or if we are talking about cricket, so graph represent clear data about the event that is going on. For example, in the telecast of one-day cricket match, vertical bar graph show the run rate of team in each over. ये तुम लोग देखे हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है जिससे रन रेट पता चलता है। As you have studied in mathematics, a straight line graph helps in solving linear equation having 2 variable. और ये मैथ में भी हम लोग वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 वेरिएबल को लिनियर इक्वेशन में इसका यूज करते हैं। तो अगर हम लोग if we are going to describe the motion of an object, we can use line graph. हम लोग लाइन ग्राफ को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी दैट इज टाइम। हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे मोशन को स्टडी करने के लिए तो एक फिजिकल क्वांटिटी, लेट अस कंसीडर दैट आइदर वी आर टेकिंग द डिस्टेंस or we are taking the velocity. So what we are going to do, we are simply going to represent the motion by using a graph. तो हम लोगों को 2 फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, या तो हम लोग ले लें फिजिकल क्वांटिटी में सी, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आई एम टेकिंग एज डिस्टेंस। तो अगर हम लोग इधर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिए, here we are I am indicating distance simply by d, and here we are indicating the time taken. हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को ले रहे हैं वन साइड में और इधर टाइम टेकन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 physical quantity we have taken. One is the time, and for time we are using time and it is measured in second or minute,
Next, we are using the physical quantity distance that is measured in kilometer. Okay. Now see how we are going to make a graph. Say distance time graph. This is called the change in the position of an object with time. So first of all, we will mark that what is the distance covered. Let us start taking the gap of. See, this is our 0 point. Okay. From 0, it is starting 10, then 20, 30. In this way, we are going to indicate 40. Okay. So let us kilometer we are indicating. ये measurable quantity जो distance है, that is the physical quantity, and we are measuring it in kilometer. So see from initial position here 10 kilometer to this much, here 20, then 30, then 40. We are representing 10 difference. 10 का difference लेके हम लोग distance को represent कर रहे हैं. ठीक है. Now next time taken भी people are taking. Time taken को जो है हम लोग 20, 40, 80 ऐसे करके हम लोग ले रहे हैं. Means after in 20 minutes what is the distance covered, then in 40 minutes, in 80 minutes what is the distance covered, we people are taking. ठीक है. कितना distance को cover up किया. तो अगर हम लोग graph को draw कर रहे हैं, suppose I am taking one point that in 20 minutes the distance covered, say it is 20 kilometer. अगर 20 मिनट में 20 मिनट में वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस को शो कर रहा है, या 10 किलोमीटर डिस्टेंस 20 में शो कर रहा है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो हियर वी आर टेकिंग टाइम टेकन इज 20 मिनट और 10 मिनट बेटर वी टेक. अगर 10 मिनट हम लोग ले रहे हैं तो 10, 20, 30 हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग. सो it is covering in 10 minutes. Say it is in kilometer we are representing here, but say it is 100 kilometer if we are taking, क्योंकि ये बहुत कम है. So 100 अगर ले रहे हैं तो 10 मिनट में अगर ये 100 जा रहा है तो यहाँ हम लोग इंडिकेट, और जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे here we will take the point. So it will be straight graph. ये जो है ग्राफ स्ट्रेट बनेगा. ठीक है. Distance time graph can be employed under various conditions when object move with uniform speed or non-uniform speed. अगर वो equal distance, equal interval of time में cover करता है, it means the speed is, what does it indicate? If it is covering equal distance in equal interval of time, then the graph will be, कैसा graph बनेगा? It will be straight. Okay. And what it will represent? It will represent that the speed is uniform. कैसे speed को represent करेगा? Uniform speed. See, so here जो मैंने ये बनाया था, here simply graph में हम लोग क्या करते हैं? This is our x-axis, this is our y-axis, and in this way we prepare the graph. You have seen in math also. Math में भी तुम लोग graph को बनाए हो. ठीक है. तो graph को हम लोग बनाएंगे. वही यहाँ पे NCERT में एक एग्जाम्पल देके दिखाया हुआ है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ एडॉप्टिंग ए कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस. एक ऐसा स्केल यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए जो कि प्रॉपर हो. दैट इज टाइम इज टेकिंग अलोंग एक्स एक्सिस. हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग माय एक्स एक्सिस. दिस वन इज आवर एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस है जो कि इधर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. से दिस वन इज आवर वाई एक्सिस, और ऊपर जो है डिस्टेंस को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी used for various purpose. When an object travel equal distance in equal interval of time, it move with uniform speed. अगर हमने इसमें दिखाया कि equal distance को कवर कर रहा है equal interval of time में, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो straight line में बनेगा और वो uniform speed को represent करेगा. This so that distance traveled by an object is directly proportional to time taken. Distance जो है किससे proportional है? Directly it is proportional to time taken. वो directly proportional है कितना time लगा उससे. Thus, for uniform speed, a graph of distance traveled against time is a straight line. As I told you, when we people are drawing a distance time graph, and if we are representing uniform speed, then our graph will be a straight line. ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. ठीक है. And that is given in your book. Now, what is the total distance covered? What is the total time taken? Okay, that will represent the speed of an object. Total distance upon total time. Okay, in this way we are going to find out the we can say the speed.
हम लोग को स्पीड पता चल जाएगा कि क्या स्पीड है उस ऑब्जेक्ट का। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। नाउ इज दिस क्लियर टू यू ऑल? क्या ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Or do you have any problem? Distance is covered by the object in equal interval of time. Okay, तो अगर equal distance cover कर रहा है object हमारा equal interval of time में, then our graph will be a straight line. But if we are talking about the car which is moving on a road, okay, and its speed is differing, or time taken that also differ, okay, then how, what kind of graph will be there? Whether it is a straight graph, क्या एक straight line graph मिलेगा हमको if the motion is not uniform? Yes, tell me, if the motion is not uniform, whether we are going to get a straight line graph? क्या एक straight line का graph मिलेगा? नहीं मिलेगा हमको, because it is covering unequal distance. वो unequal distance को cover कर रहा है, ठीक है। तो non-linear variant means distance traveled by the car with time that will differ. So graph will be of non-uniform speed, and it is shown in NCERT book in this way. It is shown in the NCERT book in this way. ऐसे हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं शो कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दैट इज, ओके, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है। क्या ये क्लियर हुआ तुम लोगों को कि नहीं, ये बताओ मुझे। अगर किसी को नहीं क्लियर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो which is on x axis, okay, see here I am showing to you picture distance time graph. For distance time graph, what we are doing, we are drawing it like this. This is our x axis. ये जो है ये हमारा x axis है, और ये जो है हमारा y axis है, ठीक है। जो y axis है इधर है, और x axis को हमने इधर डिनोट किया, क्या ड्रॉ करने के लिए? फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम टेकन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ ऑल द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आर टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। जो इंडिपेंडेंट है, जैसे टाइम को हमने इंडिपेंडेंट कहा, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट है, तो वो इधर हम लोग लिख रहे हैं एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस को लिखे थे जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए थे, ठीक है। नाउ when we are talking about uniform speed, then what kind of graph will be there? See the figure. Graph कैसा होगा? When we are indicating here distance, here we are indicating time taken, our graph will be a straight line like this. हमारा जो graph होगा वो इस तरह का straight line होगा। For what I am talking about? For uniform, ये uniform speed की बात कर रहे हैं, ठीक है। But when the speed is not uniform, second graph I am drawing, see here, it will be somewhat like this. See again here we are representing like this. Non-uniform speed, it may be like this. ये non-uniform speed को ये show कर रहा है। And if distance for a stationary, how we are going to indicate? See, it is somewhat like this. If we are indicating here stationary, it is somewhat like this. ये stationary के लिए, here distance, time, here also distance and time. See, all the three, तीनों को देखो। एक जो है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है, जो कि फर्स्ट वन ये है हम लोगों का। People have taken this, we are writing it as number A. Say this one, it is representing uniform speed. Number B, this is representing non-uniform speed. And number C, we are talking about the stationary, means it is stationary. Stationary मतलब क्या होता है? What is the meaning of stationary? Anyone tell me? जब हम लोग stationary, Object at rest. yes, please repeat. When we call it a stationary object when the object at rest. May the time differ, but the distance covered will remain fixed. Means it is stationary. It is not going to change. It is a fixed one. Okay. So speed equal to distance upon time. That is the formula which we people talk about. ये हम लोग आज जो भी डिस्कस किए, that is related with distance time graph.
ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में को हम लोग जो है पढ़े, ठीक है. क्वांटिटी as velocity and another one as time, then how we are going to draw the graph. Again the graph will be of that type, because here we are saying that the physical quantity which we people have people are taking is distance, but if we wish we can consider velocity also. तो दो क्वांटिटी हमको लेनी है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, दूसरा डिपेंडेंट क्वांटिटी है. तो independent quantity को, for independent quantity what we are going to do, we are going to mention the independent quantity on the along the x-axis, means this is the x-axis, and along vertical side if we are taking y-axis, then there we are going to represent the dependent quantity, okay, along with independent one. So there we are mentioning the dependent quantity. So दो quantity लेंगे, either here we are taking velocity or we are taking distance, and our independent quantity, that is the time taken. So in this way we are going to draw the distance time graph or velocity time graph. इसको हम लोग draw कर सकते हैं, ठीक है. तो in NCERT it is given with example. Please go through that one. A straight line, okay, how we are going to represent it by graph. The variation in velocity with time for an object moving in straight line can be represented by velocity time graph. Velocity time graph से हम लोग ये variation in velocity with time को represent कर सकते हैं. अगर कोई object जो है straight path पे move कर रहा है तो इसको भी तुम लोग ये भी तुम लोगों के, here I have represented distance time graph. Now how you are going to what are the uses of this distance time graph? We are talking about uniform speed, non-uniform speed, or if the object is stationary, all the three things we people have discussed. Now what are the use of distance time graph? Yes, anyone? See, a distance time graph shows how the distance and speed of an object changes with time. Okay, it tell us about the position of the body at any instant time. Say if I am asking, if I am representing here by 10, 0, 10 minutes, 20 minutes, then what is the actual position of object at a particular time you are going to find out. ये जो distance time graph है, उससे हमारा object का actual position क्या है, उसको हम लोग find out कर सकते हैं. At a particular time or at an instant time, what is the position of object we can find out. Second one, we can also find the time interval. हम लोग time interval को भी find out कर सकते हैं. Distance covered by an object in a particular interval of time. एक खास interval of time में कितना distance वो object ने cover किया, उसको भी हम लोग इस distance time graph से find out कर सकते हैं. Is this clear to you all? Means we are going to find out what is the position of an object at a particular time, and moreover by using the distance time graph we can also find out the time interval which is taken by the object to cover a particular distance. इन दोनों चीजों का हम लोग जो है पता लगा सकते हैं.